गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे आई, बी, यू, ही, शी, इट, and they, I, we, I, we, you, he, she, it, and they are, and they are called personal pronoun. Personal pronoun. I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun. एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल इसमें आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड नंबर पॉइंट है इसका। सेकेंड नंबर पॉइंट है possessive pronoun। possessive pronoun possessive pronoun लिखेंगे the pronoun used to show the pronoun used to show position the pronoun used to show position is called a possessive pronoun। A possessive pronoun, the pronoun used to show position is called a possessive pronoun। A possessive pronoun। एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे दिस बुक is mine। This is mine।
दिस बुक इज माइन। इस सेंटेंस में माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है। थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे the pronouns myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive, are called reflexive pronoun. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns when the action done by the subject, turns back, upon the subject, turns back upon the subject, turns back upon the subject. एग्जाम्पल लिखेंगे I hurt myself.
I heard myself. I heard myself. I heard myself. I heard myself. I heard myself. फोर्थ नंबर पॉइंट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन demonstrative pronoun लिख के डैश देंगे, लिखेंगे द प्रोनाउन used the pronoun used to point out the subject. The pronoun used to point out the object, or objects. The pronoun used to point out the object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun. Is called a demonstrative pronoun. एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस इज ए बॉय। एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय। इस सेंटेंस में दिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस में दिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बड़ा और रिपीट कर देती हैं। फर्स्ट जो काइंड है वो पर्सनल प्रोनाउन। I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. I am going to school। इस सेंटेंस में I personal pronoun। सेकेंड पॉइंट is का possessive pronoun। The pronoun used to show position is called a possessive pronoun। This book is mine। इस सेंटेंस में mine जो वर्ड है वो possessive pronoun। reflexive pronoun, the pronouns myself, ourselves, yourself, yourselves
himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject. I hurt myself. मैं अपने आप को या खुद को चोट पहुंचा। जैसे माई सेल्फ जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ पॉइंट है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच इट रेफर्स इज कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज ए वर्ड। इस सेंटेंस में दिस जो है वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको सभी अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ओके, बाय।